Hello everyone, welcome to my channel Clarity First. This is capsule number 3. We are going to study about caste. Also, there is something called Varna, right? This is also something that we will understand, and we are also going to understand the difference between these two, caste and Varna, because this is something we are confused about most often, right? So in the end, we'll understand the difference between these two as well. Okay, fine. Let's get started. So caste is uniquely Indian phenomena, and this is nothing but etymology of caste, which says that caste is borrowed from a Portuguese term casta, which means pure breed. Right? All right. So there is nothing to explain over here. Let's get on to the characteristics of caste. This is also mentioned in the in I think sociology book of class 12th. The characteristics are briefly mentioned. So yeah, let's get started. The first characteristic is membership by birth. इसके लिए there's a term that is ascribed status. Okay, ascribed status means membership by birth. So, in a caste system, you acquire membership by birth. You are born with a certain caste. ठीक है? So, your caste is determined by and at birth. Caste is a birth-based system. A person is generally born into a particular caste. You are born into a particular caste, and the caste is inherited from your parents, of course. So this is an example. If a person is born into a particular caste, traditionally they would be considered a member of that caste throughout their life. Oh, throughout their life. Meaning that you can't really change your caste. Change नहीं कर सकते हो आप caste. You are born with a certain caste. You live your life with that same caste, and you die with that same caste, right? So if you're born, say, whatever, you're born Kayast. Kayast is a caste in northern India. You're born a Kayast, you will live your life throughout as Kayast, and you will die as Kayast. So see, ascribed status you have understood? Something which is determined at birth. कि birth पे ही determine कर लिया that you are a person of XYZ caste, है ना? और क्या हो सकता है ascribed status? Your gender, your sex. There's a difference between the two terms, but we'll discuss about it later. This is something that is ascribed status. It is determined at your birth that you are a male or a female, right? Okay. This cannot be changed throughout your life. This is going to be same. Your caste is going to be same throughout your life. But there is something called achieved status. ठीक है? Achieved status क्या होता है? Say for an example, class. Class is achieved status. You might be a poor, born a poor, but you might become middle class. This is something that you can change. This is something which is not determined by your birth. ये birth से determine नहीं हो रहा है. कैसे determine कर रहे हो इसको? By effort, by your hard work.
right? I hope you're able to understand the difference between ascribed status and achieved status. Again, I'm going to repeat. Ascribed status is something that is by birth, and achieved status is something that you may acquire. ठीक है? See, this is something that will help you remember what ascribed status is. है ना? इसकी जरूरत नहीं थी पढ़ने की. But this is what it is. So, पहला characteristic of caste system is that it is a birth-based system. Your caste is determined by and at birth. ठीक है? So, by and at birth. ठीक है? I hope you've understood this. Let's get on to the next characteristic. Hierarchy. The caste system is hierarchical, meaning different castes are placed at different levels of social status. Okay, so caste are not placed like this. ऐसे नहीं प्लेस करते हैं कास्ट को. कैसे प्लेस करते हैं? This is how castes are placed. Vertically arranged. Right? The castes are vertically arranged this way. ठीक है? All right. So different levels of social status. Okay. So in the bottom you will have low status. At the top you will have high social status. This is what it is. So there are castes placed above and below. है ना? And several other castes between them placed in a vertical fashion. Vertically placed है. एक ज्यादा होगा किसी का सोशल स्टेटस, किसी का सोशल स्टेटस कम होगा. इक्वल नहीं हो सकता है दो कास्ट का सोशल स्टेटस. ठीक है? ऐसे प्लेस नहीं कर सकते हो आप. दिस इज रॉन्ग. So some castes are traditionally considered higher while others are considered lower. Caste was not simply a difference between social groups. Difference नहीं है, ये ranking है. At a lower position, the lower your position is, the lower your social status is going to be. ठीक है? तो you can't say that these are different. ऐसे भी तो हो सकते हैं ना different फिर तो. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. No, there is ranking involved. You are placing a caste at a higher position, then a caste below it, and below it. I hope you've understood this. So caste creates a hierarchy of higher and lower social status. ठीक है? So castes are not placed like this. ऐसे प्लेस नहीं होती हैं कास्ट. कास्ट आर प्लेस्ड इन अ वर्टिकल फैशन. Some castes are placed above, some are placed below, and several other castes between them, which are also placed vertically. So no, remember this thing, no two castes are equal. There is always going to be a hierarchy involved in the caste system. So what are the two features or characteristics that we've studied? One is ascribed status. Second is hierarchy. ठीक है? I hope you've understood. Endogamy. First, let us understand the meaning of this term endogamy. Endogamy. देखो, gamy means what? Gamy means marriage. Endo means what? It means within.
ठीक है. Try to break down words as much as you can. It really helps. So there is also something called exogamy. You just think about it, pause the video, think कि क्या होगा इसका मतलब. Gamy means marriage. Exo means what should it mean? Within तो endo हो गया, exo क्या होगा? Outside. So just a second. Endogamy means marrying within a social group. पहले तो मीनिंग समझा करो, then get to the characteristic, right? Marrying within a social group. It can be anything. ठीक है. Then exogamy means marrying outside a social group. ठीक है. ओके. सो कास्ट का क्या फीचर है? दैट देयर हैज टू बी मैरिज विद इन द ग्रुप. मतलब इफ यू बिलोंग टू कास्ट एक्स, you have to marry the members of that same caste, right? If you're born into a X caste, you'll have to marry the person of that very caste. उसी कास्ट के इंसान से आपको मैरिज करनी पड़ेगी. This is what the rule is. Though there has been cases of intercaste marriages that we have been seeing contemporarily, but वो है due to modernization and all of that. That is something that we are going to study later. But caste का एक feature है endogamy, that you are expected to marry within your own caste. So people are expected to marry within their own caste. Marriage outside the caste was often discouraged. इसको डिस्करेज किया जाता है. सो कैसे करोगे डिस्करेज? लेट्स अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी क्या है? सोसाइटी है, राइट? तो कैसे करोगे? हाउ आर यू गोइंग टू डिस्करेज? इफ से अ पर्सन A marries a person B, this person belongs to X caste, this person belongs to Y caste. Then how are you going to discourage these people? There can be boycott, social boycott, right? Other punishments can also be involved. Very extreme punishments if you want to see. So there are things like honor killings. There are cases, ना? This is not something very rare. इतना बहुत rare भी नहीं है. Cases हैं honor killings के, cases हैं boycott तो very normal. Right? Your caste members, people of your own caste will start boycotting you, will not maybe attend your wedding, right? They will try to boycott you. They would want you to do what? To marry within your own caste. Simple idea यही है कि अपनी कास्ट के अंदर मैरी करो. क्यों? क्योंकि this helps keep caste boundaries separate from one generation to another. देखो, you are aware about Ambedkar ji? What he said? Intercaste marriage. I'm writing it in short. Intercaste marriage is the only way to destroy caste system. Right? If you marry intercaste, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा सिस्टम. रहेगा ही नहीं ना कास्ट का. देखो, एक्स कास्ट का पर्सन वाई कास्ट से मैरी करता है तो इनके किड्स होंगे एक्स वाई कास्ट के. प्लीज यार इसको ना कास्ट से समझना, डोंट गेट इट टू अदर बायोलॉजिकल मीनिंग्स. ठीक है? एक्स वाई. दिस मैरीज अ पर्सन ऑफ से जेड कास्ट, तो इनके किड्स कम्स टू एक्स वाई जेड कास्ट. So there will be a intermixing amongst the caste. So at some point, caste system will not be able to survive as a part of this thing, है ना? Endogamy इसीलिए एक फीचर है कास्ट सिस्टम का,
क्योंकि ये कास्ट बाउंड्रीज को सेपरेट करके रखता है, ठीक है। इट परपेचुएट्स कास्ट सिस्टम. It is something what Ambedkar ji says, that it is something which is responsible for the very survival of caste system till now. ठीक है. I hope you have understood the meaning. Let's get to other characteristic. All right. So traditional occupations. Okay. It says that different castes are associated with different occupations. अलग अलग कास्ट अलग अलग ऑक्यूपेशन से एसोसिएटेड हैं. A person of XY caste is expected to perform whatever occupation, say A occupation. For an example, you've heard about the names also, na? There are names also. कास्ट के बेसिस पे जो ऑक्यूपेशन है उसके नेम्स हैं. यू हैव हर्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड सुनहार, लोहार, बढ़ई. What are these? I'll write it in English also. This is goldsmith, this is ironsmith, this is carpenter, है ना. So these are the caste only. और कास्ट का नाम ऐसे है that it reflects the occupation, right? So this is goldsmith. I'm writing in short. This is ironsmith. This is carpenter. ठीक है. ठीक है. All right. So, and these occupations are hereditary, meaning children are expected to follow the occupation of their family. You have to take this very occupation forward. If your father is a goldsmith, he is going to teach you about what? About goldsmithery, and you are expected to go into this very occupation. Certain castes were traditionally associated with occupations such as farming, trading, priesthood, or particular forms of craftsmanship. Simple idea kya hai? See, I've written this so that you remember this only at the end of the day. Your caste could influence what work you are expected to do. अभी इट इज नॉट कंटेम्पररीली ऐसा हो रहा है क्या? थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कंटेम्पररी टाइम्स का, है ना. अभी के टाइम में ऐसा हो रहा है क्या? आई डोंट थिंक सो ऐसे हो रहा है. आई बिलोंग टू वट एवर कास्ट, आई एम एस्पायरिंग फॉर समथिंग एल्स एज माई ऑक्यूपेशन, राइट. You might belong to a Brahmin caste, but you might not go for priesthood occupations, right? You might go for some different occupations, say white collar jobs. ठीक है. Just an example, okay? तो contemporarily तो ऐसा नहीं हो रहा है that your caste, whatever caste you are born into, it is not associated or it does not impact your occupation. अभी तो कास्ट कम इम्पैक्ट कर पा रही है ऑक्यूपेशन को, एटलीस्ट इन अर्बन एरियाज. दिस इज नॉट माई बायस कि अर्बन एरियाज में हो रहा है. दिस देर आर वेरियस स्टडीज विच हैव गिवन सम डिटेल्स अबाउट दिस बीइंग टेकन प्लेस, है ना. इसीलिए. ऑल राइट. Okay, let's revise again. So, what we've studied, I think 4. Just a second, 4. Yeah. First was ascribed status. ठीक है. Second was hierarchy, that castes are arranged in hierarchical order. They are not equal. No two castes can be equal. They are arranged vertically, one above and one below the other. Other is endogamy. You have to marry within your own caste. And then we have traditional occupations. I hope we are clear with it. If you are not, just write in the comments. I will help you understand. ठीक है.
All right, let's come to next. Restrictions on food and social interaction. Caste rules traditionally regulated who one can eat with, accept food from and interact closely with. इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ना कि ये जो लोग हैं एक्स वाई जी कास्ट के, कोई है एबीसी कास्ट है, तो ये सब रेगुलेशन है हमारे पास. प्रॉपर गाइडलाइंस आर लेड डाउन रिगार्डिंग सोशल इंटरेक्शन एंड फूड एक्सचेंज कि एक्स वाई जी कास्ट एबीसी कास्ट से किस तरह का फूड एक्सेप्ट कर पाएगी डिपेंडिंग अपॉन देयर रैंक इन दी हायरार्की. ठीक है, दे हैव टू मेंटेन अ सर्टेन डिस्टेंस. मैरिज अपने अपनों में ही करो. दिस इज व्हाट कास्ट सिस्टम एक्सपेक्ट्स यू. ठीक है, so let me give you an example. There is something called kacha khana. See, it is called this way only. I can't say it raw food and cooked food, है ना, because उसका meaning अलग हो जाएगा. If you are a Hindu, you might have heard about it very nicely. Kacha khana and pakka khana. What is kacha khana? Food which is processed in water. For an example, rice in water, चपाती इन वाटर, है ना, वाटर में ही तो प्रोसेस किया जाता है ना इसको. पक्का खाना मीन्स फूड विच इज प्रोसेस्ड इन से घी इन ऑयल और वॉट एवर. ठीक है, दिस इज पक्का खाना. नाउ देर आर क्लियर गाइडलाइंस. फॉर एन एग्जाम्पल, एक हायरार्की कंसिडर करते हैं. एक कास्ट है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी. सो caste A can accept what kind of food from caste D? It has to be this pakka khana, घी and oil. क्यों? अभी हम पढ़ने वाले हैं कि this caste is lower in social status. But why? Because it is considered impure. Or say not impure, I don't think so impure is the right word. Say less pure. Less pure than caste A. कास्ट डी को सी पोजीशन यही है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है इन ऑर्डर ऑफ देयर सोशल स्टेटस. सो दिस क्लास कास्ट इज कंसिडर्ड लेस प्योर. नाउ इफ ए कास्ट इज टू टेक सम फूड फ्रॉम कास्ट डी, then the food has to be what? It has to be pakka khana, meaning it has to be processed in ghee and oil. Just a second. Yeah. So it has to be processed in ghee and oil. इसको घी एंड ऑयल में प्रोसेस करना पड़ेगा तभी एक कास्ट ले पाएगी. क्यों? Why? See, this is an example. I just want you to understand and internalize the this very feature. You don't need to write all of this in your exams, especially class 12 students if you're watching it. ठीक है, this is just an example to help you understand. But ऐसे होता है, ऐसे होता था स्पेशली इन अर्ली टाइम्स जब कास्ट सिस्टम आया कि ए जो कास्ट है वो डी से पक्का खाना ही ले सकती है, बिकॉज उसकी अगर वो पक्का खाना है सो इट इज प्रोसेस्ड इन घी एंड ऑयल and less impurities of caste D will get transferred to caste A. This is something that was considered. ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना प्योर एंड इम्प्योर का, ये एक तो दुमो की थ्योरी से भी आया है. जस्ट नेम ऑफ सम सोशियोलॉजिस्ट. यू डोंट नीड टू गेट इनटू इट, जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि जो भी कास्ट जितनी भी नीचे है वो उससे कम प्योर होती जा रही है. ठीक है, the more lowly the caste is placed, the lesser pure it is. ठीक है, तो दिस इज समथिंग. ऐसे करके ये भी था कि किस तरह के यूटेंसिल्स में फूड लिया जा सकता है. अपर कास्ट किस तरह की यूटेंसिल्स में फूड लेगी फ्रॉम द लोअर कास्ट. You don't need to get into it, but I hope you've understood what I'm saying. That people belonging to different caste, they have some important guidelines related to exchange of food and water and social interaction.
ठीक है, इसको एक और चीज बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड रोटी व्यवहार। यूल से कि मैं हिंदी टर्म्स यूज कर रही हूँ, बट यही टर्म्स यूज करते हैं, यू कांट रियली यूज इंग्लिश टर्म्स ओवर हियर। एंड बेटी व्यवहार, इसको ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स में यू कैन मेंशन इफ यू वांट समवेयर। ठीक है, so there are restrictions on food and social interaction between different castes, and different guidelines are laid down for their exchange of food and social interaction. ठीक है, they are expected to maintain social distance, XYZ caste को ABC से social distance बनाना पड़ेगा। this meant that this meant caste affected everyday social relationships, not just marriage। ना सोशल रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करेगी। यू कांट रियली सिट विद अ पर्सन ऑफ लोअर कास्ट एंड जस्ट हैंग अराउंड इन अर्ली टाइम्स स्पेशली। तो क्या है सिंपल आइडिया, कास्ट कोड influence what you eat with and socially interact with. Who could you eat with and socially interact with? Sorry for this, I don't know, थोड़ा सा गलत बोल रही हूँ मैं, but I'm really sorry for this. Caste could influence who could you eat with and socially interact with. ठीक है, all right, so purity and pollution. Traditional caste hierarchy was connected to the idea of ritual purity and pollution. This is what I've been telling you. The purer the caste is, the higher it is going to be placed in a hierarchy. A caste is purer than B, which is purer than C, which is purer than D. है ना, ऐसे ही तो है। So it is about purity and pollution. ठीक है, and this idea, again I'm repeating, it was given by Louis Dumont, very famous scholar when it comes to caste। ठीक है, some occupations and groups were considered more pure, while some occupations involving things such as handling dead bodies or even human excreta in ancient times, okay, were considered polluting. And the polluting the caste is, the lower it is going to be there in the hierarchy. The idea was used to justify higher or lower position of different groups. कि A higher क्यों है? क्योंकि इसकी occupation pure है, hence it is placed higher। ठीक है, तो ये प्योरिटी और पोल्यूशन का आइडिया है जो जस्टिफाई करता है द पोजीशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। so idea of purity and pollution justifies what position of different groups in hierarchy। ठीक है, so this is what it is, I hope you've understood this। the pure the caste is going to be कैसे pure? by its occupation। ठीक है, the purer the caste is going to be, the higher it is going to be placed in the hierarchy। ठीक है, so you can say purity is directly proportional to whatever high position। ठीक है, something of this sort, I hope you've understood this as well। चलो, social restrictions and untouchability। so the lower caste, जिनको आप lower caste मानते हो, उनको काफी सारी सोशल रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ती। So there were some social restrictions that these have to face। See, what social restrictions? अब प्रॉपरली अगर मैं बात करूं कास्ट सिस्टम की, so the lower caste were not permitted to draw water from the village well। ठीक है, नहीं कर सकते थे, जो आपके गांव का कुआं होता है वहां से आप पानी नहीं ले सकते थे if you are a lower caste person। not allowed to walk on roads। yeah, you might be wondering कि ये क्या है, but this was there, इतना था caste system। ठीक है, and there were various different practices that were undertaken
फॉर एन एग्जाम्पल, इफ देर इज अ बैड न्यूज, एक कोई विलेज है उसमें बैड न्यूज है, बैड न्यूज मीनिंग समवन इज डेड, so a lower caste person would be assigned with this responsibility to disseminate this information throughout the village, कि आप जाओ और पूरे गांव में इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करो. कैसे करोगे? इफ देर इज वॉट एवर जिसको आप डिसेमिनेट करने जा रहे हो, वो गेट खोलेंगे, वो आपको देखेंगे, अच्छा यू आर अ लोअर कास्ट पर्सन, दैट मीन्स देर इज समथिंग बैड इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग. इतना था, ठीक है. इट वॉज सो एक्सट्रीम. अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस यू आर अवेयर अबाउट, ठीक है. अभी हम पढ़ते हैं कि अनटचेबल्स एक्चुअली कौन होते हैं, अभी पढ़ते हैं, ठीक है. Then you know that this practice of untouchability was abolished under Article 17 of the Constitution. I hope you are aware of it. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स पढ़ा होगा आपने, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स. आई होप यू हैव स्टडीड दिस. ठीक है. तो अनटचेबिलिटी वाले प्रैक्टिसेस थे, जैसे विमेन को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करना है. इवन विमेन तो एजुकेशन नहीं ही लेंगी हायर कास्ट की भी, बट लोअर कास्ट का तो कोई भी पर्सन एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी उसके पास नहीं रहती थी. तो इट वॉज दैट एक्सट्रीम. ठीक है. So this is what it is. यही लिखा है. The caste system also resulted in discrimination against certain communities, particularly those historically treated as untouchable. They were denied access to many common facilities and spaces, faced restrictions in areas of temple entry, access to wells, education, public places. ठीक है. तो इतना एक्सट्रीम था ये. एंड या okay, so we've completed the 7 characteristics. I think class 12th की book में एक और है which says that there are various subcaste. ठीक है. within caste, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, there is a caste called Teli caste. Teli is a caste, oil pressers. ठीक है. this is a caste. तो इसमें भी सब कास्ट है. एक बैल तेली, दो बैल तेली, एंड वन इज शनिवार तेली. दिस इज द सब कास्ट. ठीक है. तो ऐसे भी रहती थी, और इनके बीच में भी देर आर गोइंग टू बी कास्ट. तो देर आर सब कास्ट विद इन कास्ट एंड सब कास्ट विद इन दी सब कास्ट. तो इतना है ये सिस्टम. ठीक है. So this is one of the characteristics that was mentioned in the book. Okay, so we've completed all the characteristics. I hope you've understood and you will be able to write it in your answer sheets. ऐसे समझाने की कोशिश की है मैंने. I don't know कितना समझ आया होगा. Now I want you to do an active recall. मेरे साथ active recall करो. I don't know whether I will be able to remember all of it or not because I am not well today. ठीक है. But let's see. पहला क्या था मुझे तो याद है, चलो मैं शॉर्ट में लिखूंगी. ठीक है. जस्ट ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म थिंग्स. सेकंड क्या था? थर्ड, इट्सी ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, इसको आइडेंटिफाई कर लो बस, शॉर्ट फॉर्म्स को. फोर्थ, इसको आई वांट टू क्लियर. दिस इज ऑक्यूपेशनल स्पेसिफिकेशन. दिस इज व्हाट वी कॉल. आई हैव आई थिंक रिटन अबाउट ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन. वन मोर, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर. लास्ट हमने ओके ये पढ़ा है. ओके, इसको करने की कोशिश करना.
ठीक है. So yeah, we have completed the characteristics of caste system. Now let's try and understand the difference between caste and varna. Let me change the color of the pen. मैं थोड़ा सा बोर हो गई उससे. Okay, caste and vर्ण. So पहले तो वर्ण को समझते हैं. What is vर्ण? It has come from पुरुष, सूक्त, हिम ऑफ ऋग्वेद. ठीक है. इसमें बोला गया है दैट ब्राह्मण्स, देखो 4 वर्णास आर देयर आर 4 वर्ण. ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्य एंड शूद्रास. इसी ऑर्डर में है ऑफ देयर रैंक. ठीक है. ब्राह्मण्स, पुरुष सूक्त हिम्न ऑफ ऋग्वेदा सेज कि जो ब्राह्मण्स हैं दे हैव कम फ्रॉम माउथ ऑफ द कॉस्मिक बीइंग. ठीक है. ब्रह्म. एंड क्षत्रियास हैव कम फ्रॉम आर्म्स. वैश्य, they have come from thighs. Shudras have come from feet. ये बोलते हैं of the cosmic being. ठीक है. So this is what वर्ण is. वर्ण एक 4-fold classification है, 4-fold framework है. समझो इसको. वर्ण is a 4-fold framework and there are several castes within one वर्ण. एक वर्ण है फॉर एन एग्जाम्पल दिस क्षत्रियास. इसमें बहुत सारी कास्ट हैं. एक वर्ण है वैश्य नॉट वैश्या, वैश्य. इसमें बहुत सारी कास्ट हैं. देयर इज वन वर्ण शूद्र. देयर आर अ लॉट ऑफ कास्ट इन इट. ब्राह्मण, देयर आर अ लॉट ऑफ कास्ट. ठीक है. सो कास्ट इज अ रीजनल फिनोमिना. समझो, एक रीजनल फिनोमिना है कास्ट. मतलब अगर देयर इज सम कास्ट जो आपको नॉर्दर्न इंडिया में मिलेगी तो वो कास्ट आपको सदर्न इंडिया में नहीं मिलेगी. You might not encounter that very caste in the southern part of the country, right? So caste is a regional phenomena, it is a localized phenomena and ये ground level पे exist करता है. You have studied ना जाति. जाति means caste. भाई कास्ट एक रीजनल फिनोमिना है, एक लोकलाइज्ड फिनोमिना है. ये ही ग्राउंड लेवल पे एग्जिस्ट करता है. तो वर्ण का क्या काम है? इस वर्ण फ्रेमवर्क का क्या काम है? सो आई एम अ नॉर्थ इंडियन. ठीक है. मैं एक नॉर्थ इंडियन हूं. मैं आपसे मिलती हूं. आई टेल यू अबाउट माई कास्ट. वॉट एवर यार, आई डोंट वॉन्ट टू टेक नेम ऑफ एनी कास्ट बिकॉज उससे बायस मुझे, आई एम नॉट अ प्रमोटर ऑफ दिस सिस्टम ऑनेस्टली. ठीक है. तो I am a North Indian, you are a South Indian. I meet you and I want to know about your caste. मुझे आपकी कास्ट के बारे में पता करना है कि यार मतलब कौन से वर्ण से हैं. How should I treat this person? You say I am a Nambudri. Sorry, apologies if I am pronouncing it wrongly. ठीक है. आई विल से यार मेरे जो हमारा रीजन है नदर्न इंडिया का, यहाँ पे तो नंबूदरी करके कोई कास्ट नहीं होती है. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट कास्ट इज इट. बिकॉज से आई एम अ व्हाट कायस्ट. एक्चुअली आई एम अ कायस्ट. सो आई एम अ कायस्ट. आई नो दैट आई बिलोंग टू क्षत्रिय कास्ट. तो मुझे इन्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए? आई डोंट नो. Now this Varna framework will help me understand and help me analyze your position in the ritual hierarchy. Oh, okay, Nambudri means Brahmins. Okay, you belong to Brahmin caste. You are at a higher position than mine. मैं क्षत्रिय का वर्ण से बिलोंग करती हूँ, आप ब्राह्मण वर्ण से बिलोंग करते हैं, तो आप एक हायर पोजीशन पे हैं मुझसे. So I should treat you that way.
what way, वही कच्चा खाना पक्का खाना concepts, and there are various other concepts also involved. ठीक है, कि किस तरह की यूटेंसिल में किस तरह की रिस्पेक्ट यू हैव टू ऑफर टू अ पर्सन एंड ऑल ऑफ इट. So I hope you have understood. So what is caste? Caste is a localized regional phenomena. ठीक है, ग्राउंड लेवल फिनोमिना है. वर्ण क्या है? इट इज अ पैन इंडिया फ्रेमवर्क. इट विल हेल्प यू असेस one's position in the ritual hierarchy. I hope you've understood the meaning and अब आप confuse नहीं करोगे. ठीक है, let me repeat it once for you in short. These are the 4 वर्ण. इसके अंदर बहुत सारी कास्ट आती है. ठीक है, ये कास्ट है, बहुत सारी कास्ट आती है. ये कास्ट नॉर्दर्न इंडिया की होगी, कोई सदर्न पार्ट की होगी, कोई से ईस्टर्न पार्ट में होगी, एंड